In today's class, we will understand how we can derive the Schrödinger wave equation. In the previous lecture, you must have remembered that we have discussed that electron has got wave nature, and as a system, as a wave system, it is basically a standing wave or a stationary wave system. So let us consider this electron wave propagating in space like this. This is the primary wave, and then the dotted lines, they are representing the secondary waves in action, creating interference patterns which may be either destructive or constructive. This we have already discussed, and due to interference there are certain points in the space which are called nodes and antinodes which are created while the electron wave is in action. So this electron wave, let us consider this wave up to this point x. So this distance from the origin, this point is origin suppose, and from here to here the distance is x. So up to this distance x, this is one wave. The distance travelled by one wave is what is referred to as wavelength. So here we have a wavelength lambda. These things we have to remember first. We have to recall all the terms that are associated with the wave so that we can proceed with the derivation. Now in this we have discussed a function which is called psi. We have discussed this in our previous lecture, where psi refers to the amplitude of the electron wave. You can see the maximum displacement of the wave from the mean position is what is referred to as amplitude for any particular wave. But especially in case of electron wave, we refer this amplitude as psi, which is also known as the wave function. So now that we have recalled all the terms which are involved with the Schrödinger wave equation, we have already seen the form of the Schrödinger wave equation. In today's class, we are going to derive that entire equation and how we can proceed with that. So as we have quickly recalled what the different terms associated with the electron waves are, we will first of all define a wave equation. Now all waves, they can be all waves which has got a standing, that is standing waves or stationary waves, they can be represented with a sine wave equation. So waves, since electron represents such a system, we can define the electron wave system with a sine wave equation. With a sine wave equation. How can we write this equation? We can write this equation as psi is equal to a sine 2 pi x by a by lambda. Let this be equation number 1. Now we have to define the different terms that have come up in this equation. Psi, as we have already discussed, it is the amplitude of the electron wave, also known as the wave function. Then we have, so here you will define it, where psi is amplitude of electron wave, known as wave function. We can define it as wave function here, or we can define it later. Since we have already discussed this in previous topics, we can write it here. Now then we have the next term, that is lambda. Lambda refers to the wavelength of this wave that we are studying. Wavelength. Now wavelength at what point? At a distance x from the origin. X we have already defined here, x from the origin. Now what we are left with here is pi. You already know pi is 22 by 7, it is a constant, and a here also refers to a particular constant. So now that we have defined all the points, all the terms that have come up in equation number 1, we will proceed further to differentiate this equation. So the next step is to differentiate equation number 1, and that too we will not differentiate it once, but we will go for a double differentiation of this particular function, that is psi, with respect to the variable x. The variable is x here. I hope you are well aware of how the differentiation is done. Considering you have a mathematics background,
you will be able to recall what differentiation is. So here we have on double differentiation, of equation 1 with respect to the variable that we are having here is x, because we are only considering right now the propagation of the electron wave in one dimension. Although it propagates in the three dimensions x, y and z, we will first of all solve it for first dimension, that is one dimension, that is x. So d psi by dx, our equation was psi equals to a sine 2 pi x by lambda. So we differentiate psi with respect to x, we get a into 2 pi by lambda into, now differentiation of sine theta is cos theta, so we have cos 2 pi x by lambda. Okay, so this is first differentiation. We have differentiated it only once. Now we will go for the double differentiation. When we double differentiate this particular equation, we will get d2 psi by dx square equals to a into 2 pi by lambda. Now 2 pi by lambda is the constant that we have taken here after differentiating 2 pi x by lambda, into, again we are differentiating it, so differentiation of 2 pi x by lambda will be 2 pi by lambda into, now we are differentiating cos x, cos theta, so it will be minus sin theta. This will give us minus sin 2 pi x by lambda. Let us just solve this to get a shorter term, that is 4 pi square divided by lambda square into a sine 2 pi x by lambda. So this we are getting for d2 psi by dx square. So let this be equation number, let this be equation number 2 and this be equation number 3. So now double differentiation is done. But we know that what is the value of psi? We have already defined the sine wave equation, that is psi equals to a sine 2 pi x by lambda. Now we have to substitute this value of psi from equation number 1 into equation number 3. So in this equation number 3, we have to substitute the value of psi. So substituting the value of psi from equation 1 in equation 3. We have to substitute the value in equation number, from equation number 1 to equation number 3. What do we get now? d2 psi by dx square is equal to minus 4 pi square divided by lambda square. So what is the value of psi? This entire thing is the value of psi. That's why in place of a sine 2 pi x by lambda, we are going to just put, we are going to substitute that term with psi. Okay, now we are going to convert this into a differential equation. It has not yet taken the form. We have to bring the right hand side, the terms in term on the right hand side on the left hand side. So we can rearrange it as d2 psi by dx square plus 4 pi square divided by lambda square into psi equals to 0. Now we have come to a differential equation for psi in one dimension. Let us mark this as equation number 4 and this as equation number 5. So we got 5 equations so far. Now what is this equation? What is the significance of this equation number 5? It is the equation for one dimensional standing wave, and which we are considering here as the electron wave. Now this particular equation, which we have written it in one dimension, we can extend it further to describe the motion of the electron in all the three dimensions. But हमें क्या करना होगा यहाँ पे? हमने अभी इसे x एक्सिस के टर्म्स में अभी इसे लिखा है, तो हमें बस इसमें y और z टर्म के टर्म्स में भी लिखना होगा, y और z एक्सिस को भी इसमें इंक्लूड करना होगा. जब हम इसे बाकी के दोनों एक्सिस
तक इसको एक्सटेंड कर देंगे इस इक्वेशन को, तो हम एक इलेक्ट्रॉन के वेव प्रॉपर्टी को तीनों डायमेंशन में हम डिस्क्राइब कर सकते हैं. सो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन. सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू एक्सटेंड दिस डिफरेंशियल इक्वेशन to 3 dimensions. And when we do that, all we have to do, what we are going to do, we are basically going to, अभी हमारे पास सिर्फ x एक्सिस के लिए जो टर्म है, बस वैसा ही टर्म हमें यहाँ पे y और z एक्सिस के लिए भी लिख लेना है. So extending, what we are going to write here, we are going to write that extending equation 5 to describe the wave motion. Remember, we are considering the electron as a wave besides being a particle, and we are trying to find out a wave equation, or we are trying to find out an equation which can describe the wave property of the electron. Okay, so the wave motion of the electron, describe the wave motion of the electron in 3 dimensions. But remember now that we have done a complete differentiation in the previous steps, but right now, because now we are going to introduce the other 2 dimensions, we have to use the second order partial differential equation. Okay, so we can introduce, after introducing the y and the z terms, we are not going to write d, but a new term, that is dou. So let's write here. How can we define the new equation? We can write it as dou 2 psi by dou x square. So it was earlier d2 psi by dx square. Now because we are introducing the other 2 dimensions, we have to differentiate with respect to all the 3 axes, all the 3 variables. So here we are going to convert it to partial differential equation. Now the next term will be in terms of y after x, dou y square प्लस dou 2 psi by dou z square. ये आ गए हमारे तीनों एक्सेस के टर्म्स यहाँ पे. एंड लास्ट में हमारे पास क्या था, द टर्म 4 pi square by lambda square into psi. Now since there was no variable in this equation, you can see in the previous equation when we had written equation number 5, इस पर्टिकुलर टर्म में कोई वेरिएबल नहीं था, यानी कि x नहीं था. सिंस x was not there, we are not going to rewrite this in terms of y and z as well. It will simply stay the way it is. Okay, so this will be equal to 0. ये हमारे पास एक नया इक्वेशन आ गया, इसे हम इक्वेशन नंबर 6 मार्क कर देंगे. And what is the significance of this equation? This is the equation which describes the wave motion of the electron in the 3 dimensions. Okay, so now यहाँ पर अब हम psi जो wave function है, psi is a wave function, that means it's a function, and it is a function of the 3 coordinates, that is x, y and z. That means the value of psi depends upon the position of the particle along the x, along the y, along the z axis, along all the 3 dimensions. So we can redefine equation number 6 and we can rewrite it as del square. I am introducing an operator, a new operator here. We have so far seen 3 operators right now. पहला हमने देखा d2 psi by dx square. That was a differential operator. Now we had also seen a partial differential operator, that is dou 2 psi by dou x square. Now we are trying to convert the entire thing into another operator, that is del square psi plus 4 pi square by lambda square into psi equals to 0. So what is this del square that we have got here right now? We have replaced, किसके जगह पे हमने इसको लिखा, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो पूरा टर्म है, इसको हमने, इस पे psi को अगर हम कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास जो बच रहा है, जो पार्शियल डिफरेंशियल पार्ट बच रहा है, that is what is known as del square. So what is del square? How you can define it? Del square refers to dou 2 psi by dou x square plus dou 2 psi
by dou y square plus dou 2 psi by dou z square. ओके, बट यहाँ से हमें साई को हटाना होगा बिकॉज एक्चुअली साई इज द फंक्शन. Psi is the function. So the operator is only this part. Operator is only this part. The psi जब हम इसमें इधर लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे तो राइट हैंड साइड में भी तब हम psi ऐड कर देंगे. बट अभी हमने डेल स्क्वायर किसके जगह पर लिखा? हमने लिखा इसके जगह पे. ठीक है. So this is a new operator that has been introduced here. It's a quantum mechanical operator. Remember in our previous class we have already introduced this new branch of science that is called quantum mechanics, जिसके तहत हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को स्टडी कर रहे हैं. अब ये जो डेल स्क्वायर है, इट इज कॉल्ड लैप्लेशियन ऑपरेटर. तो कभी आपको 1 मार्क्स क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है व्हाट इज डेल स्क्वायर और व्हाट इज लैप्लेशियन ऑपरेटर. तो इट इज डिफाइंड इन दिस फॉर्म. दैट विल बी योर आंसर. डेल स्क्वायर स्टैंड्स फॉर dou 2 psi, dou 2 by dou x square plus dou 2 by dou y square plus dou 2 by dou z square. That is the definition, mathematical expression for Laplacian operator. Okay, I hope up to this it is clear to all of you. Now let's mark this equation, this new equation as equation number 7, जो हमने reduce करके इसे Laplacian operator के form में लिखा है. Let us mark it as equation number 7. Now we have to substitute some more terms. See, we have done the de Broglie equation. According to the de Broglie equation, lambda is equal to h by m into v. That is, de Broglie wavelength is equal to Planck's constant divided by mass into velocity of the moving particle. So here the particle in this case is the electron. तो यहाँ पर हमें क्या करना है? अब इक्वेशन नंबर 7 में जहाँ आपको लैम्डा दिख रहा है उस जगह पर हमें लैम्डा के इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना है. सो सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 7, सब्सटीट्यूटिंग लैम्डा इक्वल्स टू h by m into v इन इक्वेशन 7, वी हैव क्या मिलेगा? अब इक्वेशन नंबर 7 जो है वो हमारा क्या फॉर्म था? डेल स्क्वायर साई प्लस 4 पाई स्क्वायर. क्या था हमारे पास? इट वॉज 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई लैम्डा स्क्वायर. सो इफ़ यू सब्सटीट्यूट h बाई m इंटू वी तो आपके डिनोमिनेटर में यहाँ पे h स्क्वायर आ जाएगा और न्यूमरेटर में चला जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर. तो अब हम m स्क्वायर v स्क्वायर को हम लिखेंगे न्यूमरेटर में और h स्क्वायर को लिखेंगे डिनोमिनेटर में. इंटू साई भी है इक्वल्स टू 0. अगेन लेट अस मार्क दिस एज अ न्यू इक्वेशन नंबर 8. नाउ इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा है? इलेक्ट्रॉन हैज़ गॉट अ डुअल नेचर. राइट नाउ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हम उसके वेव नेचर के लिए हम एक इक्वेशन एस्टैब्लिश करते हैं जो उसके सारे बिहेवियर को एक्सप्लेन, उसके वेव लाइक बिहेवियर को एक्सप्लेन कर सके. बट हमें ये नहीं भूलना है कि इलेक्ट्रॉन का नेचर पार्टिकल जैसा भी है. सो इलेक्ट्रॉन पॉसेसेस अ डुअल नेचर. राइट, व्हाट आर द टू नेचर्स? डुअल नेचर मीन्स it behaves as a particle and it also behaves as a wave. तो considering the particle nature, अब हमें इसमें particle nature को भी इंट्रोड्यूस करेंगे. तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एक तरह से इलेक्ट्रॉन के डुअल नेचर को एस्टैब्लिश करता है, या आप यूँ कहें तो डिस्क्राइब करता है उसके डुअल नेचर, उसके डुअल बिहेवियर को. तो व्हेन वी कंसिडर इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल, अभी तक हम इसे वेव नेचर कंसिडर कर रहे थे, अब हम इसे इसके पार्टिकल नेचर को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. कंसिडरिंग इलेक्ट्रॉन as a particle, what will happen? What changes will happen to the equation? We can introduce this electron as a particle can have a total energy. Considering electron as a particle, then total energy of the system, इसके पास एक total energy आ जाएगा. Total energy जिसको हम कैपिटल E से डिफाइन करेंगे. Total energy of the system क्या हो जाएगा? विल बी द सम टोटल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, इट विल बी द सम टोटल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम
कैपिटल V से डिनोट करते हैं, प्लस काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी को हम कैपिटल T से डिनोट करते हैं. सो इन शॉर्ट वी कैन राइट इट एज टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कंसिडरिंग दैट इट इज अ पार्टिकल. वी कैन एक्सप्रेस इट एज V प्लस T, और T प्लस V ऑल्सो यू कैन राइट. नाउ T का एक फॉर्मूला हम यहाँ पे लेंगे, V को तो V ही लिखेंगे, लेकिन T के एक फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे. काइनेटिक एनर्जी दैट इज T, it is equal to half mv square. I hope you all are aware of this. We have studied this in physics so many times that kinetic energy of any moving particle is written as half mv square. So अब इस t के वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, यानी कि E के इक्वेशन में पुट करेंगे. So this gives us half mv square plus capital V for potential energy. अब potential energy को हम V ही लिखते हैं. यहाँ से हम V स्क्वायर के टर्म को डिराइव करेंगे. क्यों हमें V स्क्वायर यहाँ पे निकालना है? क्योंकि प्रीवियस इक्वेशन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक V स्क्वायर है, बस इसी को हमें एक वैल्यू देना है. दैट्स वाई वी आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स राइट नाउ. सो व्हाट डू वी हैव हियर फ्रॉम दिस इक्वेशन? V स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 into E plus V by M. लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 9. अब हमें करना क्या है नेक्स्ट स्टेप में कि इक्वेशन नंबर 9 से वेलोसिटी स्क्वायर यानी कि V स्क्वायर के वैल्यू को इक्वेशन नंबर 8 में पुट करना है. ठीक है, इसको जब हम पुट करेंगे we will get del square psi plus 8 pi square m. जब हमने पुट कर दिया तब हमारे पास ये इक्वेशन आ रहा है. I am jumping a couple of steps but I hope this will be clear to you. ज़्यादा हार्ड कैलकुलेशन नहीं है. ऑल यू हैव टू डू इज टू मल्टीप्लाई 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर विथ 2 into E plus V by M. इतना जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर तो वी विल बी गेटिंग दिस पर्टिकुलर इक्वेशन. नाउ लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 10. सो वी हैव ऑलरेडी रीच्ड द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. इफ यू रिमेंबर आई हैव डिस्कस्ड this form of Schrödinger wave equation in the previous class. You can also replace the Laplacian operator with its original, with its form, the entire partial differential form. तो आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं. दैट इज जब आप डेल स्क्वायर के जगह पे उसके वैल्यू को पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा? डो टू साई बाई डो एक्स स्क्वायर प्लस डो टू साई बाई डो वाई स्क्वायर प्लस डो टू साई बाई डो जेड स्क्वायर प्लस 8 pi square m by h square into E minus V psi equals to 0. So you see this is another form of the Schrödinger wave equation, equation 11. Now this is the actually complete form of the Schrödinger wave equation. This is what now we have derived it. Our main focus was to derive this expression or this Schrödinger wave equation, which we have now completed. नाउ लास्ट में करना क्या होगा कि आपको सारे जो यहाँ पे टर्म्स इन्वॉल्व है उसको एक्सप्लेन कर देना है. समटाइम्स दे आस्क यू इन अ वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, स्टेट द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एंड एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द डिफरेंट टर्म्स. तो ये भी आपको 1 मार्क्स क्वेश्चन में या 2 मार्क्स क्वेश्चन में आपको आ सकता है. तो अब हमें इसमें सारे जो टर्म्स आ रहे हैं उसको हमें डिफाइन करना होगा. यहाँ पे पहले लिख देंगे दिस इज द रिक्वायर्ड, this is the required Schrödinger wave equation. तो हमारा डेरिवेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है, बट इट्स स्टिल इनकम्प्लीट until we define it. Where psi क्या है? Although we have we have already defined psi in the very initial steps of this equation derivation, but still there is no harm in describing it again, because what it actually means is the amplitude of the electron wave. Okay, so this is also known as wave function. And what does it define? It is the amplitude associated with electron when it behaves as a wave, right? Now what is m? M is the mass of the electron. Remember the only particle that we are studying here जिसके लिए हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को डिराइव कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉन. सो ये मास किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का ही होगा डेफिनेटली. देन h is a constant, it is a
It is also called as Planck's constant. I hope you are aware of its value, 6.623 into 10 to the power minus 34 joule second. Next is we have H के बाद आता है capital E, which is total energy. We have just now described it. It is total energy of the system, the electron wave system that we were studying. उसका total energy हो गया capital E. What is V? V is the potential energy of the system. ये जो V है इसका एक फॉर्मूला होता है, दैट इज इक्वल टू माइनस कैपिटल Z E स्क्वायर डिवाइडेड बाई R. यहाँ पर Z क्या है? इट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम. सपोज आप हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को आप स्टडी कर रहे हैं तो Z का वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1. अगर आप लिथियम सिस्टम को डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसको स्टडी कर रहे हैं, तो Z का वैल्यू हो जाएगा 3. सो व्हाट इज Z? फॉर हाइड्रोजन Z इज इक्वल टू 1. For lithium Z is equal to 3. This is atomic number. तो यहाँ Z क्या है? Atomic number of the element जिसके इलेक्ट्रॉन के नेचर को हम स्टडी कर रहे हैं. What is E? E is the charge on the electron. What is the charge equal to? Minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Also यहाँ जो ZE लिखा हुआ है, ZE can be the charge on the nucleus. Okay, यहाँ पे हो गया ZE is actually equal to charge on the nucleus. क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वही प्रोटॉन का भी चार्ज होता है. द ओनली डिफरेंस इज द नेगेटिव चार्ज. प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है. सो अल्टीमेटली यू कैन ऑल्सो राइट अ फाइनल फॉर्म ऑफ दिस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जहाँ पर हम ये जो V है इसके वैल्यू को भी हम इसमें सब्सटीट्यूट कर सकते हैं. सो लेट अस राइट द फाइनल फॉर्म ऑफ द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. फाइनल फॉर्म ऑफ the Schrödinger wave equation. What could that be equal to? सारा चीज़ वही रहेगा, बस V के जगह पे उसके वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट करेंगे. सो डो टू साई बाई डो एक्स स्क्वायर प्लस डो टू साई बाई डो वाई स्क्वायर प्लस डो टू साई बाई डो जेड स्क्वायर प्लस 8 pi square m by h square into what was the value? E plus V था, उसके जगह पे E plus Z into E square divided by R. E minus V था तो माइनस माइनस इसका कैंसिल होके यहाँ पे पॉजिटिव टर्म आ जाएगा. that will be equal to 0. So let this be question number 12, and thus we have now finally derived the Schrödinger wave equation. That is all for today's class. Just try to practice this entire derivation once or twice or thrice, as many number of times as possible, so that until you become very thorough with all the steps. Thank you everyone.